session, first session of the day 3. Today with us we have Dr. Sanjay Rajurkar sir. He is presently working at Government College of Engineering, Nagpur as Dean Academics. Sir received his Bachelor of Engineering degree from Rajurkar Regional College of Engineering, Nagpur. His ME degree from Nagpur University, and he has done his PhD in Malviya National Institute of Technology, Jaipur. He has more than 30 years of teaching experience at diploma, undergraduate, postgraduate and research level. He has taught various subjects like metrology and quality control, manufacturing process, industrial management, refrigeration and air conditioning and other subjects. His main area of interest is supply chain management and industrial engineering. He is having 50 citations, including total 7 international journal publications, 16 international conference publications and 4 national conference publications with 4 patents. He is also a recipient of AICTE Best Polytechnic Teacher Award for Maharashtra and Goa section for the year 2016. He has contributed in the development academics as Board of Governance, member at Government College of Engineering, Chandrapur, and also worked as Board of Study, member at Government Polytechnic, Nagpur. He is also recognized by AICTE as Margdarshak for MBA accreditation of Mentee Institute. He has authored a book, Supply Chain Modeling for Perishable Food Products in LAP Lambert Academic Publishing. He has worked as a research person for various faculty development programs sponsored by DTE Mumbai, MSBTE Mumbai on NBA. So, sir, I welcome on behalf of Mr. Chandrapur. I request to start. For this, what is the basic objective or motivations? Overall introductions of the content of all industry evolution, starting from the first to the fourth one, and what it exactly does in industries. Similarly, overall vision of the industry, why we go for Industry 4.0, and next to that, one of the parameters which is supposed to be there, that is 3D printing, and what are its applications in real industry as well as in day-to-day life scenario, what are its basic applications, and last we go for the conclusions of overall things. Overall motivations of this in the current scenario, there is modern approach to management, because overall if you find or if you think in that particular directions, so currently day-to-day life scenario, everyone, that is every customer wants something new, and the day-to-day life their uses or in their applications, and because of that, why we go for. And because of that, recently that the fourth revolution of industry, that is Industry 4.0 is there. Similarly, radical and fundamental metaphors of technology advancements from the initial, because it starts with the 18th century British industrial revolutions to the industry of current one. And similarly, the rapid manufacturing with design flexibility. These are all the basic motivations we go for this. Overall objective is again origin of Industry 4.0, what is the first evolution, what is the second one, what is the third one, and where we are in the current scenario of the fourth one. Pillars and key emerging technology in the fourth industrial revolutions. Similarly, the impact of Industry 4 and the future challenge, what is supposed to be there, and overall applications of 3D printing in Industry 4.0. Then, what is Industry 4.0 and why it matters? Obviously, better the questions, better the solutions, and obviously according to that, better the what works. Here, if you think in that particular directions, starting with, so this is a manual operated meat. Maybe you people are not using this, but earlier one, the previous PDGA, they are using this one, they are manually performing a task of milling. So this is the beginning of that. Single room, if you want to go for 10 watts, you have to put that 10 watts lamp. If you want to go for higher intensity, then you have to go for 60, you have to go for 40. That means 3 bulbs are required in order to fulfill the demand as per situations. But nowadays, that means this Philip lighting, they are developing the lights in that particular fashions. The single lamp is in a position to perform a task of 10 watt, is in a position to perform a task of 40 watts, in a position to perform a task of 60 watt, and that controlling can be done by a simple device by means of your own mobile also. So this is what the revolutions is
product evolutions, how they are developing. So he says you just can control Philip lighting. 1 mm पर मिनट के हिसाब से करना है तो उसका स्ट्रेंथ उतना आएगा, अगर उसी को 1 को 100 mm पर मिनट के हिसाब से करें तो स्ट्रेंथ चेंज हो जाता है। तो मटेरियल को कंपेयर करते हुए स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड को डिसाइड कर सकते हैं कि हर मटेरियल को कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 mm के पर मिनट के हिसाब से चलाए। देखिए इसमें आपने पॉइंट रेस किया स्पीड के बारे में। अगर हम थोड़ा सा प्लास्टिक फील्ड में जाएं तो प्लास्टिक फील्ड में हमारे यहाँ सभी लोग तो हैं प्लास्टिक फील्ड से भी, रेड लाइन, डेड लाइन, ये हम लोगों ने सुना है। रेड लाइन क्यों क्रिएट होती है, रेड लाइन क्यों क्रिएट होती है? दिस इज एग्जांपल। जैसे मान लीजिए आपका फ्लो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, आगे हमने ऑब्स्ट्रक्शन दे दिया, तब क्या होगा? फ्लो जाएगा, डिवाइड होगा, आगे जाके दोबारा मिलेगा, राइट? जब वो दोबारा मिलता है, राइट, तो आप सोचिए जब यहाँ से अलग हुआ उसमें फ्लो का टेम्परेचर मान लीजिए 180, 150, 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। जब घूम के वापस मिलने गया टेम्परेचर डाउन होगा, हो सकता है 60 रह जाए, हो सकता है 70 हो जाए, हो सकता है 50 हो जाए। आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड में आने पर जो दोनों फ्लो मिलेगा, हो सकता है कि प्रॉपर मिक्सिंग होगी नहीं, केवल प्रॉपर मिक्सिंग होगा, हाँ चिपक जाएगा, बट वी कैन नॉट से कि उतना स्ट्रेंथन बॉन्ड बनेगा कि वो दोनों आपस में चिपक जाए, उसकी टेंशन स्ट्रेंथ डेफिनेटली कम होगी हो। एंड दूसरा सोचिए पहले जाके ऐसे मिलेगा वो, राइट? जब ऐसा मिलने के बाद धीरे धीरे पीछे आएगा, बाकी पोर्शन बनना स्टार्ट करेगा। उस पोर्शन बोलते थे वेड लाइन, इस पोर्शन बोलते हैं मैड लाइन। मैड लाइन जो होगी और ज्यादा स्ट्रेंथन वाली देखा जाए तो बहुत पुअर होती है। तो वही चीज यहाँ पर आ रही है कि जब एक बार पार्ट यहाँ से जा रहा बढ़ते हुए वापस आ रहा है, जब ये एंड पे पहुंचेगा टेम्परेचर उसका जरूर टेक्निकली डाउन होगा, नीचे वाला टोटली सॉलिडिफाइड हो चुका है, उसके ऊपर आप दूसरी लेयर ला के दिए हो, वो परफेक्ट बाउंडेशन मिलेगी नहीं। तो जो स्पीड पार्ट है यहाँ पे कोई ध्यान रखना, इतना स्पीड रखें कि वापस जब उस लेयर पे आए तो फर्स्ट लेयर जो है थोड़ा सा प्लास्टिक स्टेज में लगे, उस टेम्परेचर उसका मेंटेन नहीं तो मटेरियल बनाते वक्त में वो उसमें क्या करें? प्योर पीएलए नहीं होगा, हाँ, कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा, वैसे आपको वो फिलामेंट बनाना पड़ेगा। नहीं तो नहीं इसी नहीं है, कोई भी आदमी फिलामेंट बना देगा, वही तो फिलामेंट बना देगा, तो वो सॉलिड पे होने के बाद वो चिपक मतलब नहीं करना पड़ेगा। मैं कोई बात बना रहा फिलामेंट कि मटेरियल उठाया और वायर बनाया और बना दी फिलामेंट। इसका सर सबसे एग्जांपल अभी हम एचडीपी का बॉटल बनता है, पाइप भी एचडीपी का बनता है, बॉटल बनता है हमारे इंजेक्शन मोल्डिंग या कंटेनर बनता है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में, और पाइप बनता है एक्सट्रूजन मशीन में। उसमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है दोनों एचडीपी है, बट दोनों का ग्रेड अलग होता है क्योंकि उसका एमएफआई रेट, फ्लो रेट अलग होना चाहिए, तो वो हम उसी सिलेक्ट करते हैं। रॉ मटेरियल सिलेक्शन भी मींस वी कैन नॉट यूज जो मटेरियल हमने यूज किया है एक्सट्रूजन में, हम इंजेक्शन में यूज कर सकते हैं। उसकी जो विस्कोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। So I thank Rajurkar sir also, sir, for this. Thank you, sir. It was a very informative, nice session.